Hello, my dear students. Today we're gonna see one more poem of class 9 NCRT. The name of the poem is A Legend of the Northland, composed by Fob Cary. My dear students, it's really a very beautiful poem. A Legend of the Northland is a ballad. So, my dear students, before we go ahead with the poem, let's understand what is ballad. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Now, the meaning of ballad is a song which narrates, talks about short stories in the form of stanzas. Now, here, if you see in the poem has 16 stanzas and each stanza has 4 lines. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. तो क्या है बैलाड्स? बैलाड्स क्या है? एक फोक कल्चर है या तो फिर पॉपुलर कल्चर है, एक लोक चित्र का एक हिस्सा है ये बैलाड्स। और वो क्या होते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलाड। और ये जो पोएम है आज की, ये एक बैलाड है। अगर आप इस पोएम के टाइटल को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें वर्ड है लेजेंड। लेजेंड इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी. An old traditional story of what? Of Northland. So here Northland means all the countries situated in the northern region of our earth. Now here in the poem the country is not specified, but it is talked that an old traditional story of Northland. Let's go with the brief introduction. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Now in this poem the writer narrates about a legend of an old lady. There is one lady who makes angry the Saint Peter because of her greed. Now she was really very greedy, this old lady, and because of her greediness Saint Peter gets angry. So let's try to understand what's there in this poem. Here we go, line by line. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Now, my dear students, just before few minutes I told you, away, away in the Northland. Northland means all those countries situated in the northern part of our earth. They can be like Alaska, Canada, Greenland, or any other region which is situated in the northern part. But here the poet does not specify particular region but talks in a general that away, away in the Northland, where the hours of the days are few, where the days are very short. Particularly she mentions here, and the nights are so long in winter. So in winter season the nights are too long and the days are too short. Here they means the people. They cannot sleep them through. Now especially this area, you know very well that the earth is slightly tilted, and this area is situated on such place for the very short time they get the sunlight, and that's why the daytime is shorter and the nights are too long. So here the poet is trying to say that even when they sleep and after few hours when they wake up, it's still the night, because she specifies that the nights are too long and the days are short. Here in this stanza she describes about the Northland, that how the duration of the night and the day are. I hope you understood this stanza. Let's go on the next stanza. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cub in their funny furry clothes. Now my dear students, this region Northland is extremely cold place. So what happens in the snowy days, where they harness the swift reindeer to the sledges. Now what is the meaning of harness? Harness means to tie. Swift means which runs very fast. Reindeer is an animal found in the North Pole. So what happens usually if we talk about in the North Pole? So there reindeers are used for the transportation from one place to another. So these reindeers are tied to the vehicle sledges. Harness means to tied. They are tied with the rope
and used as a transportation from one place to another place when it snows. So of course these other vehicles will not work. This reindeer vehicles, they are used often in the northern part of our earth. So when it snows very heavily, the children, they look like bear's cub. So all those children, why do they look like bear's cubs? Because they wear funny and furry clothes. To protect from such minus temperature, the children, when they wear the clothes, they look really very funny, and those clothes are furry, मीन्स जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर होता है ना. ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू save your life from such temperature, you have to put on such jackets and clothes that you can save your life from such deadly cold. Children, they look really very funny. They look like bear's cub. जैसे भालू के बच्चे दिखते हैं वैसे ही ये बच्चे वहाँ पर दिखते हैं जब बहुत ही ज़्यादा स्नो होता है. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Now here they means parents or elderly people, or maybe the people of Northland, and them means the children. So the parents tell, or the elderly people tell the small children a curious story. Which story? A curious story where children are really very curious to listen. Strange story. I don't believe it is true. Here now poet gives her opinion. She says that I don't think that it is true. Now my dear students, please notice this word TIS. This is the short form of it is. So whenever this word will come in the poetry next time, please remember that it is read as it is. So poet says that I don't think that it is true what they tell to their children, their young ones, and yet you may learn a lesson. Now if I tell you the same story, you may learn. Now here you means the poet is addressing to the readers. If I tell you that story, you may learn the lesson from it. Okay, आप जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें से सीख सकते हो अगर वही स्टोरी मैं आपको बताऊंगी तो. So usually the elder one, you might have heard that they often tell the stories to their children, and there are a lot of learnings from those stories. So let's see what story the poet here trying to say to us and what lesson we will learn from that story. So here we go. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. Now here the poet starts the story, and how does she start? Usually the stories, they start with once upon a time. So in a similar way she also starts once when the good Saint Peter lived in the world below. Now here Saint Peter means an apostle of Christ. Apostle of Christ means follower of Jesus Christ. When he lived in the world and walked about it preaching, when he used to walk from one place to another place by preaching. Preaching means to give a religious talk. When he used to go from one place to another place by spreading the religious talk, just as he did, you know. Now here the poet says that you know. Okay, readers को कहते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता ही है वो क्या किया करते थे. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Now Saint Peter, as I told you in the earlier stanza, that he was preaching, going from one place to another place. So one day he came to the door of the cottage in traveling round the earth. So he kept moving from one place to another place, and one day he came to the door of the cottage where a little woman was making cakes. और वहाँ पर एक छोटी सी एक लेडी थी जो केक बेक कर रही थी. ओके, केक बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ. हर्थ मीन्स फायर प्लेस. ओके, एक आग जलती है और उसके ऊपर वो केक को बेक कर रही थी. तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है. स्टांजा में कहा गया है कि घूमते घूमते जो सेंट पीटर है वो एक दरवाजे पर आते हैं और वहाँ पर एक लेडी को वो देखते हैं घर के अंदर कि वो केक को बेक कर रही हैं. सो लेट्स सी फर्दर.
and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Now, here faint means weak. Now, Saint Peter was moving from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह वो प्रीचिंग करते करते जाते थे और इसमें वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे. सो बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, उन्होंने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया था. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरा दिन ऑलमोस्ट बीत गया था. एंड हियर सेंट पीटर आस्क्ड दैट लेडी दैट फ्रॉम योर स्टोर ऑफ केक्स, तुम्हारे पास इतने सारे केक्स हैं, क्या आप उसमें से मुझे एक केक आप दे सकते हो खाने के लिए? क्यों मांग रहे वो केक? बिकॉज ही वॉज रियली वेरी हंग्री एंड ही वॉज फीलिंग फेंट. ओके, वो बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन से कुछ खाना नहीं खाया था. एंड दैट्स वाई ही आस्क्ड अ बेक्ड केक फ्रॉम दैट लेडी. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Now, as Saint Peter asked from her a small cake, okay, कि एक केक आप मुझे दे दीजिए, so she started making the little cake for him. So what happened that she had the collection of baked cake, but she did not give the cake from that. जैसे ही सेंट पीटर उनसे केक मांगने लगे कि उनको केक चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाना शुरू किया. बट व्हेन दैट केक स्टार्टेड बेकिंग, जब वो बेक करने के लिए उन्होंने रखा, सो शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. अरे रे 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 उड़ी बाबा, ये तो बहुत बड़ा बन गया. सो आई कांट गिव दिस बिगर केक टू दिस मैन. सो विद दिस वी कम टू नो दैट दिस लेडी इज रियली वेरी माइजर. शी डजंट वांट टू शेयर हर ईटेबल थिंग्स विथ अदर पीपल. ये तो गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. वी मस्ट शेयर द थिंग्स विथ अदर पीपल. इफ वी हैव मोर इन द क्वांटिटी, देन व्हाट इज द हार्म इन शेयरिंग विथ अदर पीपल? इफ यू आर हैविंग द लेस, अगर आपके पास कम है और आपको भूख लगी है, तो आप छोटी सी चीज़ देते हो या थोड़ा सा देते हो तो ठीक है. बट यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स. बट दिस लेडी, शी वॉज नॉट रेडी टू गिव द बिगर पोर्शन टू दिस मैन. Let's see what she decided further. Therefore, she needed another and still a smaller one. But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. So what happened? She was not ready to give the bigger one. So what did she do? She needed another. Needed means make dough from flour. Okay. So she, उसको बोलते हैं आटा बुनना, और वापस उन्होंने आटा बुनना शुरू किया और वो छोटा बनाने की उन्होंने कोशिश की. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन शी ट्राइड. तो पहली बार जब उन्होंने बनाया तो वो तो बड़ा केक बन गया. इतना बड़ा केक तो नहीं दे सकते. सो शी डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉलर वन. बट आफ्टर बेकिंग दैट स्मॉलर केक, दैट टू लुक्ड बिट बिगर वन. और वो बनने के बाद वो भी बड़ा लगा. अब देखो, ये तो बहुत सिंपल और कॉमन सी चीज़ है कि आप केक जो होते हैं वो बेक होकर थोड़ा फुल जाते हैं. सो दे लुक बिट प्लफी एंड लुक बिगर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. और जैसे ही पहले वाला बड़ा केक दिख रहा था, तो ये भी लुक बिट बिगर वन. एंड दिस ऑल्सो शी डिड नॉट फील टू गिव दैट मैन. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Oh my goodness. Now from this stanza we come to know that this lady is extremely greedy. बहुत ही ज़्यादा कंजूस है ये. अब तीसरी बार, now she took the third time scrap of dove. Scrap of dove means in a very small amount, छोटा सा डो उन्होंने लिया and rolled. अब उसको इतना पतला उन्होंने रोल कर दिया, जैसे चपाती को हम कैसे रोल करते हैं, बहुत ही थीन वो रोल करती गई और बहुत ही फ्लैट बना दिया. एंड शी बेक दैट थीन एज अ वेफर. अब वेफर आपने देखा होगा, आइसक्रीम के लिए वेफर आता है, कोन आता है, वेफर कोन आता है, जितना वो वेफर होता है उतना पतला. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. और उतना पतला केक बनने के बाद भी वो भी उसके दिल से वो छूट नहीं रहा था उस आदमी को देने के लिए. So even that she did not want to give to that man. So with this we come to know that she was really very miser
really very greedy. For she said, "My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away." So she put them on the shelf. Now, this lady who is extremely greedy, what justification she gives, how she justifies this, that when she eats her cake, they are really very small for her. But when the same cake she gives to other, those cake seems very large to give it to someone. अब इससे ये तो पता चलता है कि ये लेडी बहुत ही ज़्यादा माइज़र है, बहुत ही कंजूस है, जो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। जब खुद को खाना हो तो उसे वो केक बहुत छोटा लगता है, और किसी और को देना हो, अरे बाप रे इतना बड़ा, नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है किसी और को देने के लिए। तो ऐसी जो फीलिंग्स है, ऐसी जो क्वालिटी है, ये एक कंजूस आदमी की ही निशान है। ओके, जो कंजूस लोग होते हैं वही ऐसा सोचते हैं, जो बहुत शेल्फिश होते हैं वही ऐसा सोचते हैं। सो लेटर ऑन व्हाट शी डज, शी कीप्स ऑल हर केक्स इन द किचन शेल्फ। वो जो शेल्फ होता है उसका किचन का, उसमें वो सारे के सारे केक्स उठाकर रख देती है। एंड शी डज नॉट गिव अ सिंगल पीस ऑफ केक टू दैट मैन हु इज एक्सट्रीमली हंग्री। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब ये जो सेंट पीटर होता है, he gets angry because it's too late and he did not get a single piece of cake from this lady, because he was really very hungry and faint, feeling weak, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke means ऐसी कुछ हरकत करना जिससे कोई आपके वजह से कोई गुस्सा हो जाए, that is cause to get angry. And because of this lady, the Saint Peter gets angry. Why? Because she had so many cakes but she did not give a single piece of cake to this man, and that's why he gets angry. And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." Atamaji Satakli. Now the man, Saint Peter, gets really very angry and he curses her and he tells that you don't deserve to be human. You are far so lucky that you have got a home to stay. To dwell means to live. You have both food and shelter. You have a fire to keep you warm, but you are too selfish. You don't share all these things with someone. How can you be so greedy, so selfish, that you don't feel to share your eatable things with someone standing at the doorstep? And the man curses her. श्राप दे देता है उनको. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Now, as you know, my dear students, already that Saint Peter was really very angry and he cursed her. And what was that curse? He tells that from now onwards you will be bird. Why? Because she doesn't deserve the human form. She is not ready to help others and she is extremely greedy. So from today onwards you will be the bird. And you will look for the food. Scanty means for you will look for the little, very little food, very less food here and there. How? By boring and boring. Boring means making hole in the woods. So you'll, like for example, a woodpecker, how he digs with the help of its beak. Similarly, you will also work very hard day and night in the dry wood for your stay, for your food. So यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि अब वो एक चिड़िया बन जाएगी और अपने खाने के लिए वो यहाँ वहाँ घूमती रहेगी, जैसे कि एक वुडपेकर बर्ड है जो कैसे मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है अपने खाने के लिए, अपने स्टे के लिए, वैसे ही वो भी मेहनत करेगी. सो दैट व्हाट द सेंट पीटर कर्सेस हर. Then up she went through the chimney,
never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. And then, after the curse of Saint Peter, and up she went through the chimney. चिमनी क्या होता है? जो एग्जॉस्ट होता है, जहाँ से फायर का धुआं निकलता है. सो उस चिमनी के पास से ऊपर जाकर वो एक बर्ड बन गई. एंड नेवर स्पोक अ सिंगल वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप शी फ्लू लाइक अ वुडपेकर. शी चेंज टू अ बर्ड. और फिर बाद में वो एक चिड़िया बन गई और ऊपर उड़ गई और कुछ भी नहीं बोली. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न black as a coal in the flame. Now when she turned into the bird, जो उसने कपड़े पहने थे उस कपड़े के ऊपर उसके सर के ऊपर रेड कलर की कैप थी. स्कारलेट मीन्स ब्रिलियंट रेड कलर. तो वुडपेकर के सर के ऊपर भी वो सेम कैप जैसे था. एंड ऑल हर रेस्ट क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. और बाकी उसके सारे कपड़े जो थे वो आग में जलकर राख हो गए थे. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring for food. So in the last stanza, the poet says that every country schoolboy, country means here talks about a rural area schoolboy, has seen this bird in the woods. In the woods means in the forest, where what she does, she lives in the trees till the date, and boring for food. Boring means making holes, digging in the wood. So my dear students, I hope you understood the poem. जब भी बच्चे इस बर्ड को देखते थे तब उनके एल्डरली लोग उनको कहा करते थे, ये स्टोरी कहा करते थे, देखो ये जो बर्ड है ये एक टाइम पर एक वुमन हुआ करती थी जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थी, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थी. वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करती थी. इसीलिए एक सेंट पीटर नाम का आदमी था, उसने उसे श्राप दे दिया था और ये उसकी वजह से ये बर्ड बन गई. सो दोस्तों, इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत ही सिंपल लर्निंग है और वो है वी डोंट हैव टू बी सो मच ग्रीडी. एटलीस्ट वी मस्ट शेयर अवर थिंग्स विद द पीपल हु आर रियली इन नीड. सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको सचमुच ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करो. प्लीज़ हेल्प दिस चैनल टू ग्रो. चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.